Good morning, children. In this video, we are going to see why we should follow healthy habits and how they change our life and help us to stay healthy forever. Okay? Our today's topic is healthy and fit. Health is wealth, isn't it? How? Before we go into the topic, I just wanted to tell you that our body is our life partner. Okay? Whatever we eat, whatever we do, all matters. Our body is our asset. Our body is our responsibility. If we care our body, then it will care you more. Our body is priceless. Always remember, take care of your body. Nobody will come and take care of your body. It is your responsibility. Okay? Good. Next. Internal organs. Now we are going to see some internal organs. ये आपकी book में नहीं है, but for your knowledge you should know, because as we are discussing about healthy habits, healthy and fit, you should know about your internal organs also. So internal organs are as important as external organs. In fact, they are more important than external organs. So it's very much necessary to keep them healthy. So I have written some important internal organs and how we should take care of them, or what we have to do to keep these internal organs healthy. For lungs, we should do pranayama. ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है ना, वो सीख लेना. आपका योगा टीचर आपको सिखाएंगे. आई थिंक शी मस्ट हैव टॉट यू ऑलरेडी. तो डू प्रैक्टिस एवरी डे. ओके, देन हाउ टू कीप आवर बॉडी मसल स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग योगा रेगुलरली. एंड आपके पीटी टीचर ने आपको योगा आसनास भी सिखाए ना अभी. सिंपल steps she has taught you already. So do yoga every day. And then how to keep our mind strong and healthy. We have to do meditation. Okay, so just 5 minutes or 10 minutes meditation do every day to keep your mind strong. Then heart को कैसे strong रखना है? You should go for walking. Walking helps our heart to stay healthy. Then stomach and intestine भी इसमें आएगा, दोनों चीज़ें. तो how to keep our stomach and intestine healthy? Only by eating good food. No other option. You have to eat good food. Okay? Good means healthy food, fresh food. Okay? So by doing all these things, we can keep our internal organs strong and healthy. Okay? Good. Next is good habits. So in your book, some good habits are given. So I am showing you your book. But in that book, I think some good habits, all the good habits are given in a mixed up way. So I have, what I have decided is, I have divided these good habits into 3 headings. Like, see, the good habits that keep us clean, and the good habits that keep us healthy, the good habits that keep us fit. जो गुड हैबिट्स फॉलो करेंगे जिससे हमारी बॉडी को हम क्लीन रख सकते हैं. एंड देन गुड हैबिट्स दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. कैसे हेल्दी रहना है. एंड द गुड हैबिट्स दैट हेल्प अस टू कीप अस फिट. सो ये पॉइंट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. So in your book, see, some good habits are given. We have already discussed this when we were reading the book, reading the chapter. Again we will read it. Now the good habits that keep us clean, वो सब बता देती हूँ कि कौन से good habits हैं जो इसमें हमें clean रखता है. Number 1 is wake up. No, ये नहीं. Take a bath daily. This one. And clean your ears and nose regularly. Brush your teeth every morning and before going to bed at night. Always wear clean clothes. And then next,
ऑयल एंड कोम्ब योर हेयर डेली, एंड ये नहीं, कट योर नेल्स रेगुलरली, and then wash your hands with soap after using the toilet, wash your hands before and after every meal, rinse your mouth. ये जो habits हैं वो cleanliness habits हैं, जो these habits will help us to keep our body clean. And next heading मैंने बताया the good habits that help us to stay healthy. उसमें wake up early in the morning, and then go to bed on time at night, एंड देन हेल्दी वाले हैबिट्स में ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर. ये 3 पॉइंट्स मैंने लिया हेल्दी हैबिट्स में. प्लस आई हैव एडेड वन मोर टॉपिक दैट इज़ ईट हेल्दी फूड ऑलवेज. ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट मेन हेडिंग मैंने लिया द गुड हैबिट्स दैट हेल्प अस टू कीप फिट. उसमें मैंने आई हैव टेकन दिस पॉइंट, एक्सरसाइज रेगुलरली, एंड आई हैव एडेड फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड ऑल्सो. ओके, so let us see these habits one by one. So first क्या है, the good habits that help us to keep us clean. So हमारे बॉडी को कौन से good habits clean रखता है. Number 1, brush your teeth. So you have to brush your teeth. When you have to brush your teeth? As soon as you get up in the morning and before you go to bed at night. Okay, you have to brush your teeth ट्वाइस अ डे. 2 बार ब्रश करना है, एंड देन कीप योर टीथ क्लीन ऑलवेज. सो और भी कुछ स्वीट्स खाने के बाद यू हैव टू ब्रश योर टीथ 1 टाइम. ओके, नेक्स्ट टेक अ बाथ. सो यू शुड टेक अ बाथ. वाई शुड वी टेक अ बाथ? वैसे क्यों नहाना है? वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे टू कीप आवर बॉडी क्लीन. जो डस्ट होता है, डर्ट होता है हमारे बॉडी में, वो सारे क्लीन हो जाता है इससे. ओके, सो उसके बाद एंड फ्री फ्रॉम सम स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाता है. उसके लिए हमें वी हैव टू टेक अ बाथ. एंड देन नेक्स्ट गुड हैबिट है टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन इज क्लीन योर ईयर्स एंड नोज. सो यू हैव टू क्लीन योर ईयर्स रेगुलरली, एटलीस्ट वंस इन अ वीक. और यू शुड नॉट यूज़ सेफ्टी पिन, और कोई ऐसे यूज़ करते हैं ना हेयर पिन्स to clean your ears. Those are very dangerous habits. Do not use those sharp objects. You should always use a earbud. Earbud से ears clean करना है, and with the help of your parents or elders. And then nose. How to clean your nose? You should not put your finger in your nose. Use a soft handkerchief or hand towel to clean your nose. Okay, done. Very good. After doing all these things, you should have to wash your hands thoroughly. Next is wear clean clothes. I think you know this point very well. We have done this point in our chapter, no? जो clothes chapter पे हो गया ना ये. Next, oil and comb your hair. So you have to apply oil on your hair. क्यों oil लगाना है hair में? If we apply oil in our hair, it makes our hair strong and शाइनी, बहुत अच्छे से चमकता है इफ़ यू अप्लाई ऑयल. एंड कोम्ब योर हेयर. यू हैव टू कोम्ब योर हेयर क्लीन. आई हैव पेस्टेड फ्यू पिक्चर्स फॉर यू. कैन यू रिकग्नाइज दिस पिक्चर्स? क्लीनिंग हैबिट्स के पिक्चर्स हैं ये सारे. ओके, फर्स्ट लेट मी डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑल्सो, एंड देन आई विल शो यू दिस पिक्चर्स. देन कट योर नेल्स रेगुलरली. तो आपको अपनी नेल्स को कट करना है रेगुलरली, वंस इन अ वीक, with a nail cutter, not with scissors or blade. Don't use those sharp and dangerous objects to cut your nails. Always use a nail cutter. That do with the help of your parents or elders. Don't do it yourself. You are a very small child now. Mummy papa se bolo, they will cut your nails. Okay, and next is wash your hands. This is an important good habit, that washing hands, and especially these days COVID-19 threat पे तो we have to wash our hands often. तो कब कब wash करना है? तो after using, वैसे तो why we should wash our hands बेटा? हैंड वॉश क्यों करना है? क्योंकि डर्टी हैंड्स जो होते हैं, जिसमें डस्ट होते हैं और जर्म्स होते हैं. ओके, तो इफ़ वी डोंट वॉश अवर हैंड्स, दे विल गो इनटू आवर स्टमक,
एंड इट विल मेक अस इल, हमें बीमार कर देते हैं वो, ठीक है. सो वॉशिंग हैंड्स इज़ अ गुड हैबिट टू कीप अवे फ्रॉम जर्म्स. ओके ओके. नाउ कब कब वॉश करना है? आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स. So whenever you are using toilets, after coming out from the toilet, you have to wash your hands thoroughly with soap and water, और hand wash भी use कर सकते हैं आप. Before and after meal, before eating your food and after eating your food, you have to wash your hands. After playing outside. So generally जो COVID-19 की वजह से no one is playing outside these days. घर के अंदर ही प्ले करते हैं. इवन इफ़ यू प्ले इनसाइड योर हाउस विथ टॉयज, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, प्लेइंग विथ पेट एनिमल्स. इफ़ यू हैव अ पेट एनिमल एट होम, if you play with it, then you have to wash your hands thoroughly after completing your play. Okay, next, rinse your mouth. When we should have to rinse our mouth? We have to rinse our mouth after eating every meal, खाना खाने के बाद. और especially if we have any sweets, then we have to rinse our mouth with water thoroughly. Okay, now we can see the pictures and recognize the good habits. What is this boy doing? He is rinsing his mouth. After eating food, the boy is rinsing his mouth. And what about this child? He is taking a bath. And this boy is cleaning his ears. And he is brushing his teeth. Can you see these pictures? The girl is combing her hair. And he is wiping his hand with a clean towel. And he is cutting his nails with a nail cutter. ये बच्चा थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये खुद कर रहा है. एंड ही इज़ वॉशिंग हिज हैंड्स. एंड द लास्ट चाइल्ड इज़ यूजिंग ए हैंडकरचीफ while sneezing. So all these habits are good habits, and you have to follow these good habits. Okay, good. So we have completed these 2 pages. Next, we have completed this, the good habits that keep us clean. So the second one is the good habits that keep us healthy. जो healthy रहने के लिए कौन से good habits जो आपके बुक में है वो हम देखते हैं. तो healthy रहने के लिए सबसे पहले wake up early and go to bed on time. So this is an important good habit to stay healthy. We should wake up early to bed and early to rise. Makes a man healthy, wealthy and wise. पहले भी बताया ना मैंने आपको. पहले आपको जल्दी भी उठना चाहिए और रात को टाइम पे सोना चाहिए. ओके, बोथ द थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सॉरी. नेक्स्ट, ड्रिंक क्लीन वाटर. वाई वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर? बिकॉज क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स. देन ईट हेल्दी फूड. तो ये वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट मेनी अ टाइम्स इन आवर फूड चैप्टर. We should always eat very healthy food to keep our internal organs like stomach and intestine healthy. अभी बताया ना मैंने. So ये habits, good habits clear है. ये सब good habits हैं that help us to stay healthy. Next is we have completed keep us clean वाला भी हो गया हमारा, and then keep us healthy, it is also done. Next is keep us fit. So the good habits that help us to keep fit. To keep us fit, exercise daily. So you should do exercise every day. Exercise, it can be cycling, playing football or cricket, or any even it includes walking, jogging, running, and then swimming. You can do any exercise, but do these exercises daily, any one exercise. Okay, and then do yoga for your body muscles, and meditation for your mind. To improve your focus and concentration, do meditation for at least 5 to 10 minutes every day.
आउटडोर गेम्स अभी बताया मैंने, आई हैव टोल्ड यू. सो इन दीज डेज आउटडोर गेम्स आर नॉट दैट मच okay, but you can play in indoor also. But after this problem is over, then you can go out and play. Okay, the last one is rest to our body. This rest to our body is an important good habit, because हमारी बॉडी को हमें रेस्ट क्यों देना है. हम when we are working throughout the day, you play, you study, you work, so every the whole day we are working. एंड इतना वर्क करने के बाद हमारे बॉडी को हमें रेस्ट देना चाहिए. आवर बॉडी नीड्स रेस्ट. वाई इट नीड्स रेस्ट? टू गेन एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डेज एक्टिविटीज़. अगला दिन काम करने के लिए हमें हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए. ओके, वी एटलीस्ट वी हैव टू हैव 8 hours गुड स्लीप. सो विच दिस गुड स्लीप मेक्स अस फ्रेश एंड एक्टिव अगेन. नेक्स्ट डे अगर 8 hours हम सोएंगे तो नेक्स्ट डे वी विल बी वेरी फ्रेश एंड healthy, I mean active. Okay, done. See, I have pasted a picture here. This child, how nicely he is sleeping, isn't it? Good. Next, our next slide is the things that keep us clean. Okay, I only take the names. Nail cutter to cut our nails. Soap, when we are taking a bath we use a soap. Oil to apply on our hair. Toothbrush to keep our teeth clean. Comb for our hair. Towel to wipe our body. And then water, when we are taking a bath we use water. Shampoo to keep our hair clean. So all these items you should only have an idea about it. So when picture is given, you should know what picture is this. You have to recognize the picture. Okay, good. Next, and our last slide. Be healthy, be happy. So what does this mean? Be healthy, be happy. Now tell me, do you like to be happy? Yes or no? खुश रहना है आपको? Yes or no? Yes. I can hear you shouting yes. आप yes कहते हो. I can hear you. So if you want to be happy, then take care of your body, because a healthy and fit body keeps you happy always. So if your body is healthy, you definitely feel happy. So take care of your body. If we should stay clean and always follow all the good habits to stay healthy and fit. Okay, a child is having a good habit is loved by all. Do you want to be loved by everybody? सब आपको प्यार करना है? Yes, then you have to be a clean and healthy child. Okay, so be healthy and be happy. At the same time, always remember, सारा दिन वर्क भी नहीं करना चाहिए, सारा दिन प्ले भी नहीं करना चाहिए. कीप अ बैलेंस फॉर बोथ. लाइक आपने सुना है ना, ऑल डे वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल. एक अपने नर्सरी राइम पढ़ा होगा. तो ऑल डे वर्क भी नहीं करना, ऑल डे प्ले भी नहीं करना, बैलेंस रखना है. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. Thank you.